toy, human body toy. It can move its limbs. It can acquire different poses. Like presently, it has the arms up. We will do something with it. Okay. Can anybody tell me what is this? Anybody? Laser beam. Shabash. Laser beam. So you can on the light. Right. Then I have the torch with me. Switch on, switch off. And I have the two balls of different sizes. Right. So these things will help us. On the upside. Well, bete. So pull out the assignment. Wherever there will be the need of activity, I will perform and we will gradually move forward. Excuse me, sir. Yes, bete. Sir, chapter name is written around on board. This is wrong. Natural phenomena is our chapter. Agreed? Sir, we are doing light reflection chapter. Light. Reflection, sir. Reflection. Reflection, bete. Yes, you are right. Light, shadow, and reflections. Let's change it. Unit name is light, reflection, and shadows. So apparatus related to this I have already shown you. So this assignment is with you. How many questions are there total? You see more than 16 questions. Okay. So let's move gradually. The first question is, please read. I will read and you will see. Or in between, I will call certain students. Everybody has to sit. I have the list of your names. मैं किसी को भी माइक पे बुला के कुछ पूछ सकता हूँ. Okay? So students, please listen. A girl is 4 meters away from the plane mirror. First question. It moves a few steps closer to the mirror. What happens to the size of the image in the mirror? Consider she can see her complete image in both cases. देखो बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है ये हमारे पास एक मिरर है बेटे. ओके, प्लेन मिरर. और यहां पर पर्टिकुलर गर्ल खड़ी है. अब आपको पता है जितनी दूर इसका ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतनी दूर ही इमेज का साइज होता है रिफ्लेक्शन में. तो यहां पर इसका इमेज दिखाई दिया. अब वो कह रहा है ये गर्ल थोड़ा सा आगे जा रही है मिरर की तरफ. इट मींस लेट्स शो इट्स न्यू पोजीशन बाय another color. I am using the yellow color. So girl has moved little forward towards the mirror. आप मानोगे कि इमेज भी इधर को आ जाएगा इसका. Image has to be move forward towards the mirror because u is equal to v always. So अगर हमने यहां पर एक नया u बना दिया u new, तो यहां पर भी हमें एक v new बनेगा. v new and u new is equal to v new. करेक्ट बेटे? लेकिन क्या मिरर के पास जाने से आपकी हाइट बढ़ जाती है? कभी नहीं बढ़ती. बच्चा बोलते सर हाइट तो वही रहेगी. तो जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होती है उतनी ही इमेज की होती है. ऑब्जेक्ट की हाइट. तो ऑब्जेक्ट O stands for object. Object height remains equal to image height. तो याद रखना
इमेज जो होता है, जो शीशे के अंदर दिखता है, मिरर के अंदर दिखता है, वो हमारा इमेज होता है बेटे। इमेज सबसे खास बात, इमेज का साइज उतना ही होता है जितना ऑब्जेक्ट का होता है, और इमेज हमारे आईने से, मिरर से उतना ही दूर होता है जितना ऑब्जेक्ट दूर होता है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन पिक करूं? फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बताओ, बोलो कौन सा पिक करूं ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का। हाँ, अगर आपका थ्री है तो थ्री फिंगर करो, अगर सेकंड है तो शाबाश शाबाश, सारे बच्चों का ठीक हुआ, वेरी गुड वेरी। अर्जुना ने जवाब नहीं दिया बेटे, अर्जुना के बच्चे क्यों नहीं जवाब दे रहे बेटे? फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है? फिंगर से जवाब दो। इफ योर ऑप्शन इज थर्ड। We got module now. अच्छा अच्छा, अभी आपको असाइनमेंट ही अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, शाबाश। फर्स्ट ऑप्शन का थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत से अच्छे बच्चों ने, सभी बच्चे ये नोट कर लें, u इज ऑलवेज इक्वल टू v, ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज हाइट, ऑलवेज, हमेशा। ये दो पॉइंट नोट कर लो, शाबाश। कहां पर बेटे? प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में, ये लिखना है साथ में, इन प्लेन मिरर, जो हम घरों में यूज करते हैं, ड्रेसिंग टेबल वाला मिरर। सभी बच्चे लिखो, इन प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट। दोनों पॉइंट लिख लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट, शाबाश। अब हम चलते हैं बेटे सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है इसमें? स्टडी दी सेटअप शोन हियर। देखो मैं, सारे बच्चे अपनी असाइनमेंट देखो, सेकंड क्वेश्चन बेटे, असाइनमेंट देखो, उसमें एक फोटोग्राफ दिखा रखा है, बुक दिया हुआ है, रिंग दिया हुआ है, स्क्रीन दिया हुआ है, ठीक है? हाउ विल दी शैडो लुक लाइक, शैडो किस तरह से दिखाई देगा? क्या है बेटे, ध्यान से सुनो, मैं बनाता हूं यहां पर, यहां से टॉर्च का लाइट हुआ, टॉर्च, ओके बेटे? ये क्या बीच में क्या खड़ा हो गया हमारा? बुक हो गया, बुक। देखो ये बीच में क्या आ गया बेटे? बुक आ गया। तो टॉर्च से निकलने वाली लाइट को कौन रोकेगा? बुक रोकेगा। उसके बाद यहाँ पर छोटे साइज का क्या आ गया? बॉल आ गया, और यहाँ पर स्क्रीन आ गया। ये अब देखो गौर से, मेरे पास ये स्क्रीन है, राइट? करेक्ट है बेटे? और या आप ये समझ लो कि ये मेरे पास बुक है, ये बुक है, राइट? इन दोनों के बीच में यहाँ पर बॉल है, इन दोनों के बीच में, और इधर से मैं लाइट डालूंगा, तो लाइट, लाइट उसके ऊपर आएगा ही नहीं, बॉल के ऊपर। क्यों? क्यों नहीं आएगा बेटे? क्योंकि सारा तो बुक की वजह से शैडो आ जाएगा, उस शैडो में बॉल आएगी तो बॉल की शैडो तो पड़ेगी नहीं। बॉल के ऊपर अगर लाइट पड़ता तभी तो उसका शैडो होता। अब तो टॉर्च की लाइट बुक से निकली ऐसे, टॉर्च से लाइट निकली, बुक ने लाइट को रोका और ये स्क्रीन पे पहुंचा, तो इतनी बड़ी तो बुक की शैडो हो जाएगी, इतनी बड़ी शैडो बुक की हो जाएगी, बुक शैडो। rectilinear propagation, light always travels in the straight line path, rectilinear propagation। नोट कर लो, इस वर्ड को बार बार पूछता है। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन मींस लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ टॉर्च से लाइट निकला और बुक ने उसको रोक दिया, बुक के साइड से निकलेगा, तो यहाँ बुक
बुक का इतनी जगह पर क्या आ जाएगा, बुक का शेडो। तो बॉल यहां पर आ गया, तो बॉल का अपना शेडो तो दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बॉल के ऊपर नो लाइट, यहां पर नो लाइट ऑन दी बॉल। जब तक बॉल के ऊपर लाइट ही नहीं पड़ेगा तो उसका शेडो कैसे दिख जाएगा? उसका शेडो नहीं दिखेगा। अब बताओ ए बी सी डी, गत्ते के ऊपर कौन सा दिखेगा आपको इमेज? बोलो। थर्ड, शाबाश। तो सभी बच्चों ने बोला सर सिर्फ थर्ड ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्लियर है? शाबाश। लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन। मेरे पास एक बच्चा है अर्जुन में, आरुष। आरुष अर्जुना में। प्लीज कम ऑन द माइक बेटे। आरुष कौन है? आपको थर्ड क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड क्वेश्चन? There is no dark shadow formed by the glass tumbler when light falls on it. This is because हाँ, बैठो बैठो सर। ये बोलता है अपने को क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि अगर मैंने यहां पर टॉर्च ऑन कर दिया और यहां पर कांच का शीट रख दिया, कांच का शीट, ग्लास शीट, और इधर मैंने स्क्रीन रख दिया, स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन। बेटे लाइट तो टॉर्च से निकलेगा, लाइट टॉर्च से निकलने के बावजूद ग्लास शीट का यहां पर नो शेडो, नो शेडो। लाइट तो अभी भी स्ट्रेट लाइन में आ रही है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। तो कोई बच्चा बताएगा क्यों? शाबाश। ग्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है? वेरी गुड। ग्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइट तो ग्लास के अंदर से भी निकल जाएगी। शैडो किसकी होती है हमेशा? शैडो जब भी बनती है वो हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट की बनती है। ओपेक। बच्चा बोलेगा सर ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर से लाइट नहीं गुजर पाती। कौन से? जैसे स्टोन, जैसे वुड, लकड़ी, इनकी इनकी शैडो बनेगी। तो आप, ये तो ग्लास शीट तो ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये तो ट्रांसपेरेंट होता है बेटे। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से लाइट निकल जाती है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होएगा? पढ़ो शाबाश। 1 2 3 4 ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, शाबाश, बिल्कुल सही। अरे ये तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, अपने आप ही बताए जा रहे हैं। शाबाश। मेरी, इसका मतलब टीचर की बात आप बहुत ध्यान से सुनते हो। शाबाश देनी पड़ेगी, इतने प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बेटे। मैं ये चाहता हूं, एक बच्चा है एबल, एबल सॉरी एबल ग्रुप में आद्या। आद्या है कोई बच्चा बेटे? आद्या बेटे माइक पे आओ। फोर्थ क्वेश्चन को रीड करोगे आप, फोर्थ क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। which of the following statement is true? A option: the image formed by a film camera is inverted because light travels in a straight line. Light does not change its direction on reflection. As we move the object away from the light source, the shadow of the object becomes smaller. Reflection is possible only from polished surface. बैठो बेटे। देखो बच्चे, अब मैं पहले पहले मैं बेसिक बनाऊंगा अपने बच्चों का, बाद में आप पिकअप करना। मैं क्वेश्चन नंबर 4 का बेसिक्स बनाऊंगा और आंसर आपसे ही पूछूंगा। ध्यान से सुनो टीचर की बातें। फर्स्ट बेटे, अगर ये पॉलिश्ड मिरर है, क्या है? पॉलिश्ड मिरर, तो क्या इससे रिफ्लेक्शन हो जाएगी? लाइट आई और ये इधर चलेगी, रिफ्लेक्शन पॉसिबल है,
रिफ्लेक्शन पॉसिबल है पॉलिश्ड सरफेस है। लेकिन अगर कोई ऐसा सरफेस हो जो पॉलिश सिल्वर पॉलिश्ड ना हो, जैसे कि बुक का पेज हो, ये क्या है, न्यूज़पेपर पेज, तो इस पर्सन ने अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो इसकी आंखों में लाइट जानी चाहिए, इधर सोर्स से लाइट आएगी। इसका मतलब यह हो गया जो पेपर पॉलिश्ड नहीं है वहां पर भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। रिफ्लेक्शन यस, जो रिफ्लेक्शन होती है वो पॉलिश्ड सरफेस से ज्यादा होती है, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ लाइट चले जाती है, और जो अनपॉलिश्ड होता है न्यूज़पेपर वगैरह उसमें से पूरी लाइट का थोड़ा सा पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है, और होता जरूर है। अगर ऐसा ना होता तो इस इंसान को न्यूज़पेपर के ऊपर लिखी हुई न्यूज को वो पढ़ ही नहीं पाता, टेक्स्ट को। ओके, एक बात और सुनना, जब लाइट किसी सोर्स से निकलती है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती रहती है, अपने आप कभी नहीं मुड़ती। इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट to travel in the same straight line, it never deviates at its own। अपने आप कभी भी रास्ता चेंज नहीं करेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर लाइट इधर जा रही थी, मैंने यहाँ पर लाइट ऐसे जा रही थी, मैंने यहाँ पर मिरर रख दिया, मिरर रखने से तो लाइट इधर को चला जाएगा। ओके, तब बेंड हो सकती है, हमें कोई ना कोई चीज रखनी पड़ेगी तो मुड़ सकती है। लेकिन अगर उसके रास्ते में कुछ नहीं आता तो लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती रहेगी। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन एज सेम स्ट्रेट लाइन। ओके, और एक बात और सुनो, देखो ध्यान से, यहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये बच्चा खड़ा हुआ है और पीछे से यहां पर बल्ब लगा हुआ है, बल्ब। अगर हम इस बल्ब को ऑन करेंगे तो इस स्क्रीन के ऊपर बच्चे का शैडो आएगा, कितना बड़ा शैडो आएगा, गॉट इट। अब अगर ये बच्चा इस सोर्स ऑफ लाइट से दूर हट जाए, क्या मतलब, वो रेड वाली पोजीशन को छोड़ के येलो वाली पोजीशन पे आ जाए बच्चा, येलो वाली पोजीशन पे, तो बल्ब तो वहीं पर पड़ा है, तो उसकी शैडो छोटी हो जाएगी, देखो पहले के मुकाबले छोटी हो जाएगी। यानी इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट देन शैडो साइज डिक्रीजेस, शैडो का साइज डिक्रीज होगा, येलो वाला शैडो व्हाइट वाले शैडो से छोटा है। ओके, अब बताओ कौन सा ऑप्शन है, पढ़ो सारे ऑप्शन, बोलो, शाबाश। तो सारे बाकी तीनों बातें तो गलत हो गई है ना, तो इसका मतलब एक ही चीज बची, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वो क्या है, पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या होता है बेटे, ऐसे बॉक्स टाइप हमने बनाया होता है, पीछे स्क्रीन होता है और उसके फ्रंट पे एक सुराख होता है, छोटा सा होल होता है। उस होल के सामने अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं कोई भी, तो इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट हमें इमेज बना के देगी, और वो इमेज उल्टा बनता है, उल्टा होल में से निकल के पैर ऊपर जाएंगे इस इंसान के और हेड नीचे आएगा। तो याद रखना, पिन होल कैमरा में इमेज जो बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड। एक बच्चा कहता है सर मेरे को इन्वर्टेड का मीनिंग नहीं समझ आया, तो मैं बताऊंगा, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे हो, इसके सामने पिन होल कैमरा रख दें, तो पिन होल कैमरा की स्क्रीन पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज उल्टा दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा, ऑब्जेक्ट ऐसे होएगा पिन होल कैमरा के सामने और इमेज ऐसे अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। इसका मतलब है फोर्थ क्वेश्चन में ए ऑप्शन करेक्ट है। जिन बच्चों को ये दोनों आंसर समझ आ गए हैं
प्लीज रेज योर राइट हैंड। शाबाश बेटे, एक हाथ खड़ा करना ही है आपने, या लेफ्ट या राइट। जिन बच्चों का कोई हाथ नहीं खड़ा वो प्लीज मेरी क्लास छोड़ दे, मेरी क्लास छोड़ के चले जाए वो बच्चे। एक हाथ, अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, अगर समझ आ गया तो राइट हैंड। बेटे लेफ्ट हैंड तब खड़ा करना है अगर नहीं समझ आया। हाँ शाबाश, सभी बच्चों के राइट हैंड खड़े हैं, गुड। डाउन डाउन डाउन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। शाबाश, लेट्स मूव टू दी फिफ्थ क्वेश्चन। पिन होल कैमरा का प्रिंसिपल क्या है? पिन होल कैमरा। Sir, हाँ बेटे, sir, in fourth question, first statement is also correct, C is also correct, and D is also correct. Then what will be the answer? बेटे सुनो, लाइट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से तो चेंज हो गया, तो बी इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, ए इज करेक्ट। और थर्ड देखो, जब हम सोर्स से दूर जाते थे, when we move the object away from the source, the shadow of the object will become smaller. Yeah. हाँ, ये सी ऑप्शन इसने सही लिख दिया। रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल फ्रॉम द पॉलिश्ड सरफेस ओनली। गलत हो गया ना, डी वाला तो गलत हो गया। Yes, sir. लेकिन ए और सी दोनों ठीक है, ए भी ठीक है सी भी ठीक है। Okay. क्वेश्चन नंबर 4 में ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, बी गलत है और डी भी गलत। अच्छा बेटे, पिन होल कैमरा प्रिंसिपल क्या है इसका? कौन से सिद्धांत पर यह काम करता है? व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल? देखो बेटे, इसका प्रिंसिपल है, एक बच्चे का हाथ खड़ा और में आ जाओ बेटे, माइक पे आके बताओ, तब तो मजा आएगा। शाबाश, देखो कितना डेयरिंग बच्चा है, खुद ही बता। That light travels in straight line. शाबाश बेटे, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए कौन सा पर्टिकुलर वर्ड यूज करोगे आप? Sir, linear propagation. बहुत अच्छे। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम? Sir, Herman. मैं हरमन के लिए मेरी तरफ से स्पेशल क्लैपिंग। बहुत अच्छा, आप भी क्लैप करो बेटे, बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा। मजा आ गया भाई, इतना छोटा बच्चा और इतना बढ़िया आंसर। देखो बेटे, पिन होल कैमरा में इसका जो प्रिंसिपल है वो हमेशा ये है कि लाइट अगर सोर्स से चलेगी तो वो स्ट्रेट लाइन में जाती रहेगी, स्ट्रेट लाइन। और लाइट की ये प्रॉपर्टी दैट इट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन is known as by a special name, and that special name, सारे बच्चे नोट कर लो ये वाला नाम, बार बार आता है आपके चैप्टर में, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का मतलब होता है एडवांसमेंट, आगे बढ़ना। रेक्टिलिनियर लाइन के अंदर, वो भी स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। लाइट जब भी सोर्स से जाती है तो वो ट्रेवल करती है। ट्रेवल, अगर कोई बच्चा प्रोपेगेट वर्ड भूल जाए तो उसकी जगह ट्रेवल भी लिख सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इन द पिन होल कैमरा व्हाट हैपेंस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पिन होल इज इंक्रीज्ड? शाबाश, क्वेश्चन नंबर 6 में ढूंढने की कोशिश करो क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस 6 को ध्यान से देखो, सुनो सुनो सुनो, वेट 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 वेट, पहले मैं इसकी डायग्राम बनाता हूं पिन होल कैमरा की, बड़ी अच्छी सी बनाते हैं। देखो, ये ऐसा एक बॉक्स लिया हमने, ये बेटे हमने एक बॉक्स लिया, बिल्कुल ऐसा बॉक्स जैसे हम मार्केट से नए शूज लेकर आए तो ऐसा बॉक्स मिलता है, क्यूबॉइड शेप का। ये कौन सी शेप दिखाई है टीचर ने बॉक्स की? क्यूबॉइड शेप। होता क्या है,
हमने यहाँ पर एक छोटा सा होल करा हुआ है, बिल्कुल जहां पर इसके डायगोनल कट करते हैं, यहां पर हमने एक होल करा हुआ है, राइट। होल के सामने हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। इसके हेड से रे ऑफ लाइट गई, ये होल में से निकली, यहां पहुंच गई स्क्रीन पे। देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, हल्का सा भी आपने स्ट्रेट लाइन में बेंड कर दिया तभी टीचर मार्क्स काट लेगा। और इसके पैरों से भी स्ट्रेट लाइन जाएगी और वो भी स्क्रीन के ऊपर पहुंचेगी। तो पैरों से गई तो पैर इधर दिखेंगे और हेड इधर दिखेगा, जो हेड जिधर हेड से गई। तो ये इन्वर्टेड इमेज हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, वो बोलता है सिक्स्थ क्वेश्चन में कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड पिन होल इज इंक्रीज्ड। ये वाले डिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है। मान लो u बोल देते हैं। अगर u की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटे, इस बॉय को बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा। जब ये बॉय यहां पर आ जाएगा तो u की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। देखो होल से लेकर लड़के तक जब ऑब्जेक्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये जो टेढ़ी लाइन जा रही थी व्हाइट वाली, वो उतनी टेढ़ी नहीं जा पाएगी, कम जाएगी ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब सेकंड वाले केस में, देखो मैं ऐसे ब्राउन लाइन से दिखाता हूँ इमेज। देखो ये चली लाइट, ये गई ये गई ये, लेट मी चेंज द कलर। हाँ ब्राउन बन गया। देखो अब देखो ये ब्राउन लाइन को देखो, ये गई ये गई ये गई ये गई उसके पैरों से, इस सिर से, हेड से, और ये गई उसके फुट से, यहां पहुंच गया। तो इमेज पहले के मुकाबले क्या हो गया, छोटा हो गया। देखो ब्राउन वाला इमेज पिंक वाले इमेज से छोटा हो जाता है। कब, अगर ऑब्जेक्ट और होल के बीच में गैप को इंक्रीज कर दिया जाए। पिंक वाले गैप को येलो वाला गैप बनाने से इमेज छोटा हो जाएगा। ओके, कौन सी ऑप्शन पिक करोगे सिक्स्थ में, सिक्स्थ में कौन सी ऑप्शन, देखो बेटे क्वेश्चन पढ़ो आप। कौन सी, शाबाश। सारे बच्चे, बहुत से बच्चे फर्स्ट ऑप्शन बता रहे हैं। बेटे फिंगर से बता दिया करो बस, अगर फिंगर वन है तो वन। बहुत अच्छे, देखो लास्ट में भी दोनों दो गर्ल्स एबल में कितना अच्छा जवाब दे रही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। लेट्स मूव फर्दर, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। मैं ये चाहूंगा बेटे 7 क्वेश्चन में, औरा औरा क्लास में एक बच्चा है एकनूर, एकनूर औरा में, प्लीज कम ऑन द माइक। कितना प्यारा नाम है, एकनूर। प्लीज रीड द स्टेटमेंट। That observer using a pinhole camera, she decreases the distance between the tree and the camera and look at the tree through the camera again. The image formed is as so. What can be concluded from the image? हाँ, इसमें क्या है, जो हमने अभी अभी क्वेश्चन करा था ना उसके अपोजिट कर दिया। पिन होल कैमरा में जो अभी मैंने क्वेश्चन समझाया था सिक्स्थ वाला, उसमें बॉय को हम पीछे ले गए थे, डिस्टेंस बढ़ा दिया था। अब क्या है, हमने कैमरे को पेड़ के पास ले गए। द पिन होल कैमरा इज शिफ्टेड क्लोजर टू द ट्री, ट्री इज सर्विंग एज व्हाट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब इमेज हमारा बड़ा हो जाना चाहिए, पहले वाले केस से बिल्कुल अपोजिट केस। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा था बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था कि जब u की वैल्यू बढ़ा दी थी तो इमेज का साइज डिक्रीज हो गया था, है ना। याद है आपको, बॉय को पीछे करा था, व्हाइट वाले से येलो पोजीशन पर ले गया था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, u की वैल्यू वो डिक्रीज कर रहा है, इसके बिल्कुल अपोजिट। तो फिर इमेज का साइज क्या आएगा 7th में, इंक्रीज करेगा। यू को क्या बोलते हैं, यू का मतलब बताना चाहिए बच्चों को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से बेटे, फ्रॉम
होल ऑफ कैमरा, इसको यू बोलते हैं। तो ये याद रखना है, इनका अपोजिट होता है सारा सिस्टम। देखो यहाँ भी अपोजिट, तो सभी बच्चे इसको याद करेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन पिक करोगे सेवंथ में। शाबाश बेटे, सेवंथ में क्या हो जाएगा? हाँ, सी ऑप्शन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो मैं खुद बोलता नहीं है ऑप्शन, और मेरे बच्चे से पटाख से बताते हैं। जब क्यों बता देते हैं? क्योंकि वो टीचर की बात अच्छे से सुनते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, शरारती नहीं है, अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 8, शाबाश, लेट्स स्टडी इट। पिन होल कैमरा कैन कैप्चर कलरफुल फोटोग्राफ्स। यस, बिल्कुल सही। Pinhole camera uses a lens to separate and capture colors. क्या पिन होल कैमरा में मैंने लेंस लगवाया? नहीं लगवाया, सिर्फ सुराख करा था, होल करा था। यस। तो 8th क्वेश्चन में असर्शन तो ठीक है, कलर्ड इमेज बनता है, कलर्ड इमेज बनता है पिन होल कैमरा में। यस। बच्चा कहते हैं सर कैसे पता है? अगर मैं पिन होल कैमरा को पेड़ के सामने लेके जाऊंगा, ट्री का कलर कौन सा? ग्रीन, तो उसकी पिन होल की स्क्रीन के ऊपर ग्रीन कलर का इमेज बनता है पेड़ का, इसका मतलब कलर्ड बनाता है। लेकिन पिन होल कैमरा में लेंस नहीं लगा होता, लेंस कभी नहीं लगा होता, इसलिए रीजन गलत है। ओके, तो रीजन गलत हो गया, असर्शन सही हो गया। लेट्स मूव टू द केस स्टडी। केस स्टडी बेटे। पार्डन, क्या कह रहे हो? माइक पर आकर बोले कोई बच्चे। टाइम ओवर हो गया बेटे, माइक के ऊपर आकर बोलो, नहीं सुन रहा माइक के। ओके ओके, एक क्वेश्चन हमारा छूट गया क्या? नाइन्थ क्वेश्चन हाँ करना है बेटे हम। अच्छा, ओके, केस स्टडी से पहले क्वेश्चन नंबर 9। A pinhole camera creates an image by allowing the light to pass through a small hole. बिल्कुल सही, हम शुरू से ही पढ़ते हैं, अभी बनाया था हमने। असर्शन तो सही है कि पिन होल कैमरा में लाइट छोटे से होल में से गुजर के जाती है, बिल्कुल सही। The size of the aperture decides the brightness and clarity of the image. बिल्कुल, ये भी ठीक है बेटे। ये जो पिन होल के कैमरे के फ्रंट के ऊपर होल होता है ना, ये वाला, ये वाला, ये होल अगर बहुत छोटा होएगा, बहुत छोटा होएगा, तो इमेज हमारा डिम बनेगा, क्योंकि लाइट ही कम जाएगी कैमरे में। अगर ये होल बड़ा हो जाएगा ना, थोड़ा सा बड़ा, तो ब्राइटनेस में फर्क पड़ता है। ठीक है, इमेज गाढ़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो रीजन भी सही है। 9th क्वेश्चन में असर्शन भी करेक्ट और रीजन भी करेक्ट। करेक्ट, शाबाश। अब देखो मैं आपको शैडो के कुछ बना के भी दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। ये मेरा स्क्रीन है, ये मेरे पास ह्यूमन बॉडी है, राइट। मेरे कमरे में ज्यादा ही लाइट आ रही है, मैं 1 मिनट अपने असिस्टेंट को लेकर आता हूँ। ये लाइट ऑफ करो, शैडो दिखाना चाहता हूँ। ये ऐसे पकड़ो, ऑफ करो। आप बेटे ये स्क्रीन देखना, ये देखो स्क्रीन दिख रही होगी जरूर आपको, और इसके सामने मैंने ये ह्यूमन बॉडी रखी, देखो इसका शैडो। अगर मैं इस शैडो को, अगर मैं ऑब्जेक्ट को, गौर से देखो, ऑब्जेक्ट को मैं स्क्रीन के पास लेके जाता हूं, शैडो का साइज डिक्रीज हो रहा है। यस। अगर मैं सोर्स के पास लेके जाता हूं, सोर्स के पास, तो शैडो का साइज इंक्रीज हो रहा है।
दिख रहा है बेटे? आपको दिख रहा है? अगर ये दिख रहा है तो यस राइट हैंड बोलो, राइट हैंड को वेव करो। शाबाश शाबाश। ये देखो किस तरह से ऑब्जेक्ट के शैडो का साइज चेंज हो रहा है, राइट? अब इसका पोज चेंज करके देखते हैं। चलो इसको फुटबॉल की किक लगाता है उस पोज में लेकर आते हैं। ह्यूमन टॉय को फुटबॉल की किक लगा रहा है, देखो। राइट, राइट बेटे? अब देखना इसका साइज चेंज आएगा। मैं इसको सोर्स ऑफ लाइट की तरफ लेके जाता हूं तो साइज इंक्रीज होता है, और अगर स्क्रीन की तरफ लेके आऊं तो शैडो का साइज डिक्रीज होता है, और वो गाढ़ा भी हो रहा है, देखो। राइट, अगर सोर्स की तरफ लेके जाता हूं तो शैडो डिम हो रहा है और साइज में बड़ा हो रहा है। राइट, चलो शाबाश। देखा, आपको समझ आया शैडो का कॉन्सेप्ट? कितने बच्चों को एक्टिविटी अच्छी अच्छी लगी? रेज योर हैंड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हम करते हैं केस स्टडी। केस स्टडी करते हैं। योर अटेंशन, आई विल रीड द केस स्टडी। सभी बच्चे मेरी बात सुनेंगे, साथ ही साथ पढ़ेंगे। व्हेन टीचर विल रीड इट। When we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. Circular images are in fact pinhole images of the sun. The gaps between the leaves act as pinholes. Gaps are all kind of irregular shapes, but we can see circular images of the sun. Called natural pinhole camera. क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना है कि इसमें पैराग्राफ में क्या बोल रहा है। ध्यान से सुनो। ये कह रहा है बेटे, ध्यान से देखो इधर। यहाँ पर हमारे पास ऐसे करके ट्री, एक ट्री है बच्चे। ये हमने ट्री दिखाया, राइट? और ट्री के ऊपर क्या है? सन, ब्राइट सन। आपको पता है जो ट्री के पत्ते होते हैं ना, वो आपस में ऐसे हिलते रहते हैं, उसमें छोटे छोटे जगह बच जाती है जहां से धूप आ सकती है, राइट? तो इसका मतलब हो गया, अगर ये छोटा सा सुराख बच गया यहाँ पर, तो जमीन जो है, ग्राउंड, ग्राउंड विल एक्ट एज स्क्रीन। ग्राउंड विल एक्ट एज स्क्रीन। देखो, ये सन हो गया, लाइट आ रही है, और ये छोटा सा सुराख हो गया, और यहाँ पर इमेज बनेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक तरह से पिन होल कैमरा हो गया। नेचुरल पिन होल कैमरा जो कुदरत ने बना रखा है। ओके, ट्री, ये ट्री है, राइट बेटे? ये क्या है? अब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज पिन होल कैमरा इन द नेचुरल पिन होल कैमरा? लीफ एक्ट एज द पिन होल, वाटर ड्रॉपलेट्स, गैप्स बिटवीन द लीव्स, और आखिर में नन ऑफ दिस। बताओ कौन सा? अपनी ऐसा बट इस आंसर दो बस, फिंगर से, 1 2 3। शाबाश, सेकंड वाला करेक्ट है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे? उन पत्तों के बीच में जो जगह है वो होल की तरह काम करेगी ना, पत्ते खुद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है गैप्स बिटवीन द लीव्स इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। इसका क्या ऑप्शन आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेचुरल पिन होल कैमरा? नंबर 1, the circular patches of the light formed on the ground are examples of images. The circular patches are pinhole images of the sun. Okay, we see circular images of the sun irrespective of the irregular shape of the gaps between the leaves. All the above. बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? सारे सही है इसमें बेटे, सारे सही, बिल्कुल सही। जो डी ऑप्शन,
चाहे इरेगुलर शेप का होल हो, हमें इमेज के सर्कुलर ही दिखेंगे, क्योंकि सन खुद एक सर्कुल स्फेरिकल है ना। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए पिन होल कैमरा? क्या क्या चाहिए? टॉर्च चाहिए, ट्रेसिंग पेपर चाहिए, लेंस चाहिए, मिरर चाहिए, क्या चाहिए बोलो? ऑप्शन बताओ। एक बच्चा कह रहा है टॉर्च चाहिए। बेटे टॉर्च के बिना भी तो बन जाएगा, अगर सन हो तो सन से भी दिख जाएगा हमें तो। दूसरा बच्चा कहता है लेंस चाहिए ना, लेंस गलत, बिना लेंस के भी काम करता है। एक बच्चा कह रहा है मिरर, मिरर नहीं चाहिए, हमने पिन होल कैमरा में मिरर नहीं लगाया। टॉर्च चाहिए, क्योंकि टॉर्च की जगह अगर और कोई बल्ब हो या सोर्स ऑफ लाइट हो तो भी काम चलेगा। ओनली ऑप्शन ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर जरूरी है। ये ट्रेसिंग पेपर पता है कहाँ कहाँ पे लगता है बच्चे? जब हमने पिन होल कैमरा बनाया था ना ऐसे करके बेटे, पिन होल कैमरा बनाया था, उसके फ्रंट साइड पे हमने होल करा था, तो होल के जो बिल्कुल अपोजिट वॉल होती है जिसपे इमेज दिखता है, वहां पर हमने ये ट्रेसिंग पेपर लगाया होता है। ये ट्रेसिंग पेपर जिसको टीचर ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, ये ट्रेसिंग पेपर होता है एग्जैक्टली अपोजिट टू दी होल वॉल। जिस दीवार के ऊपर होल होता है उसके बिल्कुल एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ जो वॉल होती है, वहां पर ट्रेसिंग पेपर का लगना जरूरी है, वरना हमें इमेज नहीं दिखता। सो थर्ड ऑफ क्वेश्चन में बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन इसका, फोर्थ क्वेश्चन। पिन होल कैमरा प्रोड्यूसेस एन, बोलो कौन सा, खुद से बताओ। फोर्थ क्वेश्चन, इरेक्ट इमेज बनता है, गलत। सेकंड ऑप्शन में भी इरेक्ट इमेज गलत। इन्वर्टेड इमेज बनता है, यस बनता है। पिन होल कैमरा ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा इमेज बनाता है, बनाता है। तो कौन सा सही है? रेज योर हैंड। कितनी फिंगर्स खड़ी हैं बेटे? 3, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और आगे बच्चे बड़ा अच्छा जवाब दे रहे हैं भाई, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, एक तो इमेज इन्वर्टेड बनता है और एक इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले स्मॉलर बनता है। इमेज के गुण होते हैं, ओके। यहाँ तक हमारा शेडो वाला खत्म हुआ। अब मेरे को ये बताओ कि आपके लेक्चर में कितना टाइम बचा है? कितना टाइम बचा है? 10 मिनट, ठीक है ठीक है, फिर हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, थोड़ा बहुत और कर लेते हैं बच्चे। अब हम एक्लिप्स दिखाते हैं। एक्लिप्स के बारे में आपको नॉलेज है कुछ? एक्लिप्स बताओ क्या होता है? एक्लिप्स कितनी टाइप्स के होते हैं? और एक्लिप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे? हिंदी में इसको ग्रहण बोलते हैं, ग्रहण, ओके। ये दो तरह का होता है, ल्यूनर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स। और क्या होता है बेटे? सोलर सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स। अब इसका मीनिंग क्या है? देखो, इसको समझने के लिए एक मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो हमारा कोई दोस्त 1 साल बाद मिलता है, हमें पूरे 1 साल बाद हमारा कोई दोस्त मिलता है, तो हम उसको बातों बातों में बोलते हैं, अरे क्या हो गया था यार, इतनी देर दिखा नहीं था तुम, ग्रहण लग गया था क्या? इसका मतलब क्या है? ग्रहण लगने वाली चीज हमें दिखती नहीं, तब हम बात करते हैं ऐसे। अरे कहाँ था तो यार, इतने दिन, 1 साल हो गया, अब दिखा ही नहीं, ग्रहण लग गया था क्या? वर यू एक्लिप्स्ड? तो इसका मतलब है, अगर हम एक्लिप्स लिखते हैं, ल्यूनर, ल्यूनर मीन्स मून से रिलेटेड, सोलर मीन्स सन से रिलेटेड। सोलर इक्लिप्स का मीनिंग ये हुआ कि हमें अर्थ पे खड़े होकर सन की पूरी फोटो नहीं दिखाई देगी, सन पूरा नहीं दिखेगा। और ल्यूनर इक्लिप्स का मतलब है
हमें अर्थ पे खड़े होकर मून नहीं दिखाई देगा। आगे समझ बच्चे? तो हम सन के अंदर क्या लिखेंगे हम? सब सोलर इक्लिप्स में सन इज नॉट टोटली विजिबल टू अस फ्रॉम अर्थ। लेकिन इसका कारण क्या है बाद में बताता हूं। इसमें क्या है? मून विल नॉट बी विजिबल विजिबल अस फ्रॉम अर्थ। अब यहां पर एक बात पक्की है कि जब भी हमने बेटे ऑरा के बच्चे गलत गलत बात है मैम, प्लीज कंट्रोल करना सेंटर वाली लाइन ऑरा में। ये बच्चे शरारत कर रहे हैं। मैं शुड आई टेक द फोटोग्राफ एंड सेंड टू द प्रिंसिपल? हाँ अब ठीक हो गया बच्चे। ओके, तो बेटे जब भी आपका एक्लिप्स की बात होगी तो देखो अर्थ की बात होगी, सन की बात होगी, मून की बात होगी, इन तीनों की बात होगी। किसकी किसकी बेटे? अर्थ सन एंड मून और अर्थ। इन तीन चीजों के बिना आप सोलर एक्लिप्स को नहीं, इन दोनों एक्लिप्स को नहीं समझ सकते। और क्या चीज याद होनी चाहिए आपको? एक आपको याद होनी चाहिए रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन जिसको नहीं पता कि लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, वो एक्लिप्स को नहीं समझ सकता। जिस बच्चे को शैडो का कॉन्सेप्ट नहीं आया समझ, शैडो, शैडो को एक और नाम से भी बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब भी शैडो ही होता है। जिसको ये तीन चीजें नहीं समझ आई उनको एक्लिप्स नहीं समझ आएगा। तो शैडो के हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे अभी। और रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब लाइट मूव्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब मैं आपको एक्लिप्स समझाता, ये आपको समझाता हूं। क्या एक्लिप्स समझाता हूं? देखो ये मेरे पास, ये देखो बेटे, ये मेरे पास टू बॉल्स है। गॉट इट? टू बॉल्स। अगर मैं बॉल को देख रहा हूं तो मेरे को बड़े वाली भी दिख रही है। मैं कहां पर खड़ा हूं? अर्थ पे। आप मेरे फेस को अर्थ मान सकते हो। देखो फिर से, टीचर का फेस क्या है? अर्थ। ओके, और इन दोनों में से एक सन मान लेते हैं, एक मून मान लेते हैं। एक सन मान लेते हैं, एक मून। सन बड़ा होता है या मून बड़ा होता है? बोलो कौन सा बड़ा होता है? सन बड़ा होता है बच्चे में। तो ये देखो, अगर ये मैं मून को ऐसे देख रहा हूं, मान लो ये सन बीच में आ जाए, छोटी चीज पीछे होगी और सन बीच में आ गया, तो क्या मेरे को मून दिखाई देगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि बड़ी चीज के पीछे छुप गया। और अगर उल्टा करें, ये देखो सन इधर है और ये मान लो मून है छोटे वाला, ये बीच में आ गया, आया आया आया, ये बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन में आ गए। मेरा फेस क्या है? अर्थ है। जब ये मून बीच में आ जाएगा तो सन बड़ा होने की वजह से साइडों से तो दिखेगा मेरे को, लेकिन कुछ पोर्शन मून के बीच में आने से सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सन नहीं दिखाई देगा। कैच कर गए? फिर से सुनो, जैसे ये मून सन के आगे आया तो मेरे को सन पूरा नहीं दिखा, अभी पूरा दिख रहा है देखो, क्योंकि मून दूर है, अलग है। जैसे ये कभी भी स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे तीनों, कौन से तीनों? अर्थ, मून और सन। मून बीच में आया तो मून के बीच में आने की वजह से सन बाउंड्री से तो दिख रहा है, क्यों? सन बड़ा है मून से। लेकिन सेंट्रल पोर्शन नहीं दिख रहा, क्योंकि सेंट्रल पोर्शन तक मेरी नजर, वहां से लाइट मेरी आंखों में आ ही नहीं रही, क्यों? बीच में मून आ गया। तो इस तरह से तो सोलर एक्लिप्स बनता है। अगर ऐसे करें, ऐसे देखो, मून उधर है, सन आया आया आया, सन आ गया, बड़े वाली चीज बीच में आ गई, तो बड़े वाली चीज छोटे वाली को तो छुपा देगी सारी को। तो बड़े वाली चीज, तो
ल्यूनर एक्लिप्स में मून बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल ही। देखो ये टीचर ने क्या लिखा, ये टीचर ने क्या लिखा था, इसीलिए क्या लिखा था बेटे, ध्यान से देखो। सन इज नॉट टोटली विजिबल, कुछ पोर्शन फिर भी दिखेगा सन का, लेकिन यहाँ पर मून विल नॉट बी पॉसिबल, सारा मून नहीं दिखेगा। तो कल हम इसको, अगले लेक्चर में इसको हम डायग्राम से समझाएंगे बोर्ड के ऊपर, ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। आज मैंने आपको जस्ट फंडामेंटल आइडिया दिया, फंडामेंटल आइडिया दिया कैसे दिखेगा कैसे नहीं, ठीक है। कल मैं इसको बोर्ड के ऊपर डायग्राम बना के ल्यूनर एक्लिप्स की, फिर कुछ और भी बताऊंगा, दो चार बातें, फिर हम इसके सेकंड पोर्शन को स्टडी करेंगे। गॉट इट? जिन बच्चों को आज एक्लिप्स से पहले पहले सारा समझ आ गया, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स, प्लीज वेव योर बोथ। देखो बेटे अर्जुना में बच्चे सुन, हाँ बहुत अच्छे हो, और वाह देखो अपना कितना अच्छा सीन है क्लास में, देखो पीछे मुड़ के देखो कितना अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, शाबाश। अगली बार मिलते हैं हम, एक्लिप्स के ऊपर प्रॉपर समझेंगे अच्छे से। थैंक यू। Class. Good afternoon, all of you. Are you fresh, all of you? You want more break? Or you are ready to continue? Okay, don't worry. We'll be doing easy questions. Okay. Please take out your module of perimeter and area. Last time we did this mensuration. We started last time. Okay. Last time we did only introduction part with formulas and all. Today we'll be starting with module. Do you have module? Raise your hand. Perimeter and area. Wonderful. Wonderful. Hands down. Take out your notebook also. We have to draw little diagrams also with free hand, no scale. Okay? Yeah. Please take it out. Yes, beta. This is mensuration module. Change the color. These are very interesting questions, right? Wherever diagram is required, I'll be telling you. Okay. First of all, there are assertion reasons. Okay. So in assertion reason, you have to apply your concept of perimeter, area. Okay, last time we did this all. Let us do assertion reasons.
Question number 1. First assertion is, please do it nicely because the whole concept of the chapter is going to use here in assertion reason. Okay, beta? First is perimeter of a closed figure is the distance covered in one round. Please settle down, Arjuna section. Everybody look straight. Module is with you. I have started reading. Arjuna section. Few children are talking at the fourth bench, middle row. Please sit straight. Yes, beta. There is disturbance then in the class. Okay. First assertion is perimeter of a closed figure is the distance covered in one round along the boundary of the figure. Last time I told you, suppose you are drawing a square and if this is the point A, you're starting from A, going around the figure and reaching back at A, it means you have completed one round. And one round is called perimeter. Okay, beta? This is called perimeter. So, is this true? Raise your hand. Yes, assertion is true. Reason is perimeter is measured in length units. What do you mean by length units? Able section. Adhya from the able section. They are saying perimeter is measured in length. What do you mean by that? Not okay. What do you mean by length units? Okay, the class girl is Rita. Please come forward, beta. Adi, you can sit. No problem. I'll be calling you next time. What do you mean by length units? Length unit means the unit of length such as kilometer, meter, centimeter, etc. Yeah. Last time I told you, if the measurement is in meter, your perimeter will be in meter. If it is in centimeter, your answer of perimeter will be in centimeter. So whatever length you have, same thing will be for the perimeter. Yes, very good. Sit down. Sit down, beta. So this is also true. You know, when such things comes in the form of sentences, you get little thoughtful for that. सोचना पड़ता है, right? Otherwise, you know, in a figure, whatever dimensions are given, meter, centimeter, same thing you are using for perimeter also, right? So its option will be B. Okay. Second question, assertion. If a square, a rectangle and triangle are all made from the string of length 30 centimeter, then perimeter will be same. If we are making assertion means they are saying we are making a triangle, we are making a rectangle and we are making a square by using 30 centimeter string. Will the perimeter will be same for all triangle, rectangle and square? Who say yes? Raise your hand. Why doubt, beta? Why you have doubt? Aurora section, Arjuna section. Who are confident that yes, if 30 meter string is used, मेरे पास 30 meter string है, मैंने उसको use करके एक square बना लिया. Then I made it into a triangle. Then I made it into that rectangle also. Will the perimeter will be same for all? Yes. Now I can see more hands. Hands down. Very good. Because perimeter is the outer boundary. Outer boundary means कि हो सकता है triangle आपका थोड़ा सा bigger बन जाए. Then rectangle could be little smaller. Doesn't matter in size. Square could be a different size. Don't look for the size, small or big.
Look for what are you are using at the boundary. Here also boundary is using 30 centimeter, here also 30, here also 30. So their parameter will be same for all the three figures. So assertion is true, right? Assertion will be true. Let us read about reason. What reason they are giving? They are saying side of square, rectangle and triangle are of same length. Side will be of same length. Think of it. You told me here perimeter is same. Perimeter means side plus side plus side. ठीक है, सारी sides को हम plus करेंगे. Sometimes 4 times sides को plus करोगे अगर 4 sides है तो, अगर 3 sides है तो 3 बार plus करेंगे. They are saying their sides are also same. Side will be same in them? No. Who are saying no? Raise your hand. Side will be different. Yes. You have understood. Because I told you, उनके किसी का छोटा triangle बनेगा और sometimes rectangle will be bigger, sometimes square will be of other size. Not matching with the rectangle. Their sides will be different. कहीं पे छोटा बनेगा, कहीं पे बड़ा बनेगा. So that's why their side lengths will be different. They cannot be same. So this is false, right? Reason is false. So your option will be C, right? Third question, assertion. If perimeter of regular hexagon, please read it carefully. Regular hexagon. We are talking about regular hexagon. Aurora section. Naman Palkar. Please come forward, beta. What do you mean by regular hexagon? Ma'am, all sides are equal. Whose all sides are equal? Ma'am, hexagon whose all sides are equal. Okay, what is hexagon? Ma'am, a quadrilateral shape which has 6 sides. This is called quadrilateral. You say this is a closed figure of 6 sides. Quadrilateral. But a quadrilateral means it has 4 sides. Quadrilateral means you're all good children. Please clear your concepts. Please sit down, beta. You are told correctly that regular hexagon means all 6 sides are equal, but this is not a quadrilateral. Please remember. Right? Quadrilateral has 4 sides. Please remember. Quadrilateral, any figure of 4 sides, will be a quadrilateral. If it is more than 4, it will not be a quadrilateral. Right? So hexagon means, hexa means 6. Hexa means 6, please remember. It has 6 equal sides. Right? You can write down here 6 equal sides. You are not using it much in your book. 6th class में ज़्यादा use नहीं है, but you will be using it in next class. Okay, so you should know it. Regular hexa means 6 equal sides. Regular is telling me equal. Okay, hexa is telling me 6. Hexagon means closed figure. Polygon, a polygon of 6 equal sides. Okay. Now they are asking if perimeter of regular hexagon is 42 centimeter, the length of each side is 7 centimeter. Perimeter is equal to, they are saying 36. Sorry, 42. Is it all right? Perimeter is 42 centimeter. What should be the perimeter of this perimeter of regular hexagon? What it should be? Side plus side plus side plus side. How many times? How many sides will be there in hexagon? 6 sides. And so all 6 are same. All are equal. You can say 6s is equal to 42. Then s will be equal to 42 upon 6. It is equal to 7 centimeter.
It means if we know perimeter, we can find the side of the polygon also. Is this true? Raise your hand who have understood. Will the side be 7 centimeter? Yes. Please write it down. Write it down. This is the formula, like 6s will be equal to 42. 6 means hexagon. Because it is hexagon, all the sides are equal and number is 6. You are adding all the equal sides and writing it as 6s. So this is true. Reason, perimeter of n-sided regular closed figure is n into length of one side. अगर यहाँ पे हेक्सागन के बदले में 8 साइड्स होती तब भी वो पैरामीटर डिवाइडेड बाय 8 होना था, राइट? अगर उसकी 9 साइड्स होती तो पैरामीटर अपॉन 9 होना था, 7 साइड्स होती तो पैरामीटर बाय 7 होना था. तो इज इट ऑल राइट? Who said true? Raise your hand. Who agreed? Reason is true? Yes, reason is true. Reason is true. So your option will be third की option आपके पास दोनों both are matching. It will be A option. Write these all small sentences with the in the module. Write down how it came, how 7 has come. You should know it. Okay. Yes, I can see many children are noting. So third question is A option. Fourth question, assertion. Area of square is side square. You know it. You have used many times. Last year also, in fifth also you used. Area of square is side square. Who say true? Raise your hand quickly. Yes, you know the formula. Yes, this is true. I need not explain you. Reason. Area is measured in square units. What do you mean by this? Area is measured in square units. Aurora section, last girl, corner, yeah, who is sitting alone, please come forward and tell me, what do you mean by that? What do you mean by this reason that area is measured in square unit? What do you mean by square units? Ma'am, if we are finding an area of a square, so we are multiplying side multiplied by side. Yes. So we will write it square. Yes, it will be centimeter into centimeter or meter into meter. That's why we write it as centimeter, square centimeter. Square centimeter means we are multiplying centimeter by centimeter. Very good. Okay, this is also true. Reason is also true, but it will be B option because they are not matching. Okay, fifth question. Assertion to find the cost of painting a wall. Suppose you have to paint a wall, okay? You have to find what? Area or perimeter? Think of it. If you have to find the cost of painting a wall, cost तो बाद में निकलेगी. First you have to find the cost of, first you have to find the area or perimeter. Who say area? Raise your hand. Wonderful. It means if you have wall, you will be painting this part. This part is the region. This part is region, which is called space, which is called area. So first we need to find area, then we will go further with the cost. Right? Fifth is also assertion true. Assertion is true. Reason. The amount of region enclosed by a plain closed figure is called its area.
amount of region enclosed, amount of region, कितना region यहाँ पे enclosed हो रहा है यहाँ पे, that is called the area. This is also true. Just now you told me for painting you will be using region, you will be using the area. Okay, so this is also the fifth one is A option. Both are related. Please keep asking me your doubt if there is any. Okay, I'm going slowly so that you can understand it deeply. Don't write the answer without understanding. Question number 6. Assertion is the length of a rectangle is halved. This is very important. Understand it carefully. If length is halved, what do you mean by halved? Arjuna section, Nandika, what should be the length here? What they are talking about length? If the length of rectangle is halved and breadth is doubled. So what you are going to write here about the length and what you are going to write about the breadth? Please tell me. Ma'am, if length is halved and breadth is doubled. Yes. What you will be writing then instead of length? What is the length representing? Halved means? Ma'am, 1/2. That is L by 2. Is it fine? Ma'am, yes. Or you can say half of L. They are same. Yeah. What should be breadth here, beta? Ma'am, 2B. 2B. Very good. Now we will be using this length and this breadth for the rectangle. Okay. They are asking then area of the rectangle obtained remains the same. What is area of triangle? What a rectangle? Sorry. What is the area of rectangle? What is the formula, beta? L into B. Length into breadth. Okay, length into breadth. Very good. When we multiply them, let us take is L by 2 into breadth. Will it be L into B? It is coming out to be L into B. Same Ma'am, as normal rectangle, which you know ma'am, already. Yes. So this should be true or false? ma'am, true. True. Very good. So this should be true. You have observed it here that when we calculate them, length is halved and breadth is doubled, their area is remaining same. Right? So it is true. Reason, area of rectangle is length into breadth. You only told me just now. This is also true. So option will be A. Sixth question, option will be A. Both are related. In assertions, you are using the same formula which had been told in reason. मैम जो थर्ड का रीजन है मैम वो एक्सप्लेन कर दो फिर से कि वो ट्रू कैसे है. Yes, I will be doing it. Yes. I like it. I like your doubts. Please stand and ask your doubts. Okay, Viti? Because in 6th class, you are making your base of the chapters. These things you will be using in next class also. Okay, don't do anything without understanding. Let us revise third question, assertion once again. I'm starting from just understand you're not right. Okay, listen to me carefully and understand. Suppose I'm talking about a rectangle, sorry, a triangle in which all three sides are equal. A. ये formula हमने किया भी था. That day I told you the formula. Okay, if all the three sides are equal of a triangle, what would be the perimeter? Perimeter will be equal to 3A. You know it. We are adding them all. Okay. Similarly, if I have square, in square also I have all the sides equal. Its perimeter will be equal to 4A by adding all the sides. You know it, right? Now, if I draw a five-sided figure, five-sided pentagon draw here, and all the sides are A, and A. All the five sides are equal. It is a regular
pentagon. This is regular pentagon. Then its perimeter will be what? It will be 5a. Perimeter will be equal to 5a. It means you have understood whatever sides we have, we add them all and find the perimeter. If we have 3 sides, we have added 3 times. If there are 4 sides, we have added them 4 times. If there are 5, then we are adding them 5 times and we are getting 5a. Similarly, in hexagon, the figure which was told in third question, it was hexagon. All the 6 sides are equal. All are A. All are same. So it will be 6a. So after doing this all, we came to know the conclusion that whatever number of sides are there, suppose n is the number of sides, right? So what will be the perimeter? Perimeter will be, if n sides are there, it will be n into a. Is it fine? So that's why they are saying, in third question they are saying, perimeter of n-sided regular closed figure. N-sided matlab, it could be 5, it could be 6, it could be 7, whatever. Okay, n is general. So its perimeter will be n into length of side. Right? यही लिखा हुआ है ना वहां पे बेटा? In third question it is written like this. That's why we said it is true. Suppose I say n is equal to 10. It means I have a figure which has 10 equal sides. So perimeter will be 10 into a. If 12 sides, I will be writing it as 12 into a. Is it fine, beta? Is it clear now? Please raise your hand. Who asked the doubt? Right. So that's why it is true and we wrote the option as A. Okay. Let us do further questions, subjective questions. Subjective. Subjective questions means you have to solve it properly. No options are there. You have to find the answer yourself. It could be of 2 marks, 3 marks, depending upon the figure. Okay. First question is, figure is given to you. Please draw it. Scale is not required. With free hand, you have to draw. It is like this. Okay. Few dimensions are given to you. Everybody draw the figure also in the notebook. This is given to be x. This is x. This is 16. And below it is 28. You have to find the value of x. X we have to find out. But in such figures, you have to imagine yourself. Okay. You have to guess a little. This is incomplete figure. You have to draw here a line with dots. A dotted line you have to draw yourself to make a meaningful figure. Yes, beta, Arjuna section, that girl is raising her hand. Yes, come forward, beta. Make it a meaningful figure, okay? Ma'am, the answer is 12. Answer is 12. X is coming out to be 12. Okay, X, 12 is correct answer. Okay, you have done it this way. You know 28 was a full length. It means you know this 16. Very good. ठीक है answer बेटा आपका. It is fine. Please sit down. Let me explain it for others. This was 16. So इसके opposite जो side होगी that will also be 16 automatically because you are converting this figure into rectangle.
Okay, so what it will be remaining side? Because total is 28, right? You have to subtract it. 28 minus 16 you have to do. It will be 12. So remaining will be 12. Right? And you can see very well from this figure, it is coming out to be a square. And this is a rectangle. You can guess it very well from the figure, shape of the figure. And you know in square, all the sides are equal. If opposite side is, one side is 12, of course, x will also be 12. So you can write it here, x is equal to 12. You need not write the unit because unit is not mentioned here. Okay. In such figures, you have to complete them, visualize them, you have to guess them, right? Because in this chapter, you are reading about area and perimeter of square, rectangle, triangle. Not beyond that. Okay. So in every figure, look for either rectangle or square in such figures and apply the formula. Okay. Let us do second question. Second question is also a figure like this. Something zigzag. You draw it. Okay, it was like this. Something like that. It is like this. Okay. Figure should be correct. Okay. Many children are raising their hands. This is X. Let me complete it first. This is given to be, this length is given to be 8.5. Vertical length. Right. And this is given to you 10.6. Please see it carefully. What all side, which side is given what? This is given to be 15. I can see many hands. Yes. Cable section. Rashneet Kaur. Let me give a hint, then you can tell me. I have completed this by dotted line. I have joined here, and then we can do like this. Beta, have you found this? 17.1. 17.1. It is correct. 17.1 is correct. Who else have found? Anybody else who has found 17.1? Yeah, good. Good. 70, this is correct answer. The rest of the children who are trying, I am telling to them. Okay. See here, this is 15. Okay, this is 8.5. It means this is also 8.5. You can write here. And this one you have to find remaining one. Little one at the top. Because bottom one you know. It is 8.5. So 15 minus 8.5 will be equal to 6.5. So this remaining tiny one, Joel, that will be 6.5. Okay. And you have known this, and now it is easy to find x because x is this whole length, and this whole length is matching with 10.6 plus 6.5. 10.6 plus 6.5. You can see very well now in the figure. So it is coming out to be 17.1. X is equal to 17.1. I know children are raising their hand. I think they have done next also. Please try this at home, remaining children. Yeah, Aurora section. Drishti. If you have not done, you can complete it. And if you have done, you can tell me the next also. Third one.
Ma'am, I am doing. You are doing. What if, fine. You can sit, beta. Yeah. This is easy. Better than second part. Yeah, I can see hand. Aurora section. Yes, that girl is raising her hand. Yes, Acho beta. Near the window. Corner girl, I can see your hand. Yes. Ma'am, 7.6. Ma'am, 7.6. Ma'am, no. No, no, no. It is smaller than 7.6, beta. Okay, please do it again. Please go back. Yeah, the second bench boy. Aurora section, second bench boy. Yes, Acho beta. Middle row. I can see more hands. Ma'am, 5.1. 5 point? Ma'am, 5.9. No, this is not 5.9. Arjuna section, first child. Who is standing? Yes. Little mistake. Calculation. Ma'am, 4.9. 4.9. बेटे आपकी माइनस की मिस्टेक है रोलर सेक्शन द बॉय हु टोल्ड मी डू द करेक्शन हु आर गेटिंग 4.9 प्लीज रेज योर हैंड yes 4.9 is correct answer okay you must know it beta there is x is smaller than 7.6 let me complete the figure for you who are not getting it I'm just completing the figure then you will guess it very well okay you know figure is like this it is rectangle then sorry. See, this was rectangle from here to here, long, and then going this side, fine, and more this side, little up, and then left, then up, then right, and going right and meeting upwards. This is x and this is 7.6. There is a lot of difference between. You can see very clearly 7.6 is longer than x and when you're completing it, you're joining it by dotted line, you're getting another rectangle. It is like this. Okay, so this is 10.3, it is given and this is given 7.6 again. Okay, so you can find it 10.3 minus 10.3 minus 7.6. It is coming out to be 2.7 and 2.7. You will be subtracting it. So x is coming out to be 4.9. I hope now many children have found. Yeah, from Aurora section, boy, beta, have you corrected your mistake? You have come to know it is coming out to be 4.9. All right. Let us do second question, beta. Compute the perimeter of the following figures. Perimeter, you know, surrounding the building, outer boundary of the figure. Okay. You need not see what kind of figure is this. Just see all the sides surrounding the figure. Okay, name is not required. Just add them. Arjuna section, last boy. You are raising your hand many times. I want to call you. Yes. Outer boundary. Look at only outer boundary, not inside. Ma'am, 14 is the answer. 14 is the answer. Yes, you have added 2. Let me write down here the dimensions. 14 is correct answer, beta. Yes, you can sit. It is 2 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 again. Why 3 again? Because this was rectangle. You can see very well. This is rectangle at the bottom. Okay. You need not bother what lines are inside. We need not see that. We want only the boundary. Okay. And of course, this will also be 3 because this is rectangle. You know, in rectangle, opposite sides are equal. So you have to write it yourself. This is missing, but you have to write yourself because you need to add it.
That's why we are doing 2 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3. You know 5 is given to you to make you confused. Don't look at that. In perimeter void, don't see the inside part of the diagram. Whatever dimensions are given inside, we need not see it. Right? 14 centimeter is the correct answer. Not centimeter, we can write it as 14 units. If you want to write like this, because centimeter, meters, no, that unit is given to us, we will write it as 14 units. Right. I hope you can do it for the one more question we are going to do, second part, then you can do further. Let us do second part also. Second part is diagram is given to you. You have to draw your own because you have to apply the formula. You have to see all the dimensions. Okay. It is like this. Try to make it without scale. Okay. It is straight and then going this side. Bottom is common. You can draw it. Whatever is given to you, write that first. Then we will guess further. It is 10. This is 12. And one side is missing here. Write down 4 here. Please write down in the module. Upper part is given to you. That is 4. Okay. 12 and 10 are already written there in the module. Write down the upper line as 4. Now find the perimeter. But a few lines are still missing. You can see very well. You need to know this also. You need to know this right hand side also. Please guess them yourself by completing the figure. Okay. It is like this. You can complete it. You can complete it so that it should look like square, rectangle. Yeah, I can see one hand. Who else has done? Yes. Good. I want to see more hands. Another section. Yes, I can see hand at the back. Yes, please come forward. The girl who is hiding behind this screen. Yes, come forward. I have seen your hand. Second last bench near the wall. Another section. Ma'am, 44. Is coming out to be 44. How? Can you tell me these sides which are missing? Can you tell me this side? Ma'am, upper one is 4. Yeah. Upper one is 4. Yeah, this is 4. Ma'am, and then 8. Ma'am, that one. This one is 8. This one is Ma'am, 8. yes. Okay. Ma'am, yes. Ma'am, that one is 4. What it should be? This one. This is missing. Ma'am, this is your 4. This will not be 4. This will not be 4. This is, this is 4. What will be this one? It will be 10 minus 4 is equal to 6. Is it fine? Ma'am, yes. Yes. Have you done in other way or you have done 6 only? Ma'am, I have done. Okay, sit down. I hope it is clear to everybody. We have completed this figure. This 4 is, you have to write it yourself. This is missing in the module. Please write it. Okay. And after joining, you can see very well, it looks like a square at the top. So all the 4 sides will be equal. Okay. All the upper one are 4, 4, 4. Then this is 12 minus 4, which is equal to 8. So opposite will also be 8. Right side will also be 8. Then total is 10.
Out of 10, this is 4, remaining will be 10 minus 4. That is 6. So we are adding them all, right? It will be 12 plus 10 plus 8 plus 6 plus 4 plus 4. Please count it 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have added all the sides. Okay? Now add them. You told me 44. Correct. Answer is correct. Answer is correct. It is coming out to be 44 units only. This is the correct answer. I hope you have understood how. Okay. Third figure, beta. In third figure, dimensions are given 2.3 centimeter, 3.5 centimeter, and bottom is 16 centimeter. Please write all the units same. Whenever you have to find the parameter, all the units are given to be same, right? So make it 16 centimeter, and please do at home, complete it. Okay, this is 2.3 centimeter, this is 3.5. Three sides are given to you. Bottom one is 16 centimeter. Please correct it. Correct the unit here. This is not millimeter, this is centimeter. Same way, fourth figure is also there. This is your homework, beta. Please do at home. You know it now how to do. Simple figure is there. Then next is you have another polygon, but this is not regular because sides are of different side, different measurement. You can see very well these two sides are given to you. Then these two are equal and these four are equal. You understand by these signs? I told you last time also, when you see single line everywhere, it means they are all same. When you see double line, then these double lines both are same. And dimensions are given to you. It is 5.9 centimeter. Please write it down. Please write it neatly. It is given very tiny. You can correct it. And bottom one is 11.25 centimeter. Okay? I hope you can do it now. It is correct now. Tell me orally, not the answer. Tell me orally what all these four sides will be and what this opposite side will be. You know it better that this is 5.9. This will also be 5.9. This will be 5.9. This will be 5.9. And this will be 11.25. You can guess very well. From their sign, you can see all are equal except these two opposite sides. Yes, I can see hand. Arjuna section. Yes, the girl is raising her hand. Aajao beta aage. Then, yeah. Have you added them? Ma'am, yes. Yes. How? What is coming, beta? Ma'am, 14.61 centimeter. 14.61 centimeter. Yeah, you know, dimension is given here in centimeter. You have to write centimeter. Okay, sit down, beta. Good. This is decimal addition. So you have to do it very, very carefully. Okay. 5.9 is coming 4 times. Right. And 11.25 are coming 2 times. You have to add them. Who else is getting the same answer? Everybody do it. You know how to do the decimal addition and multiplication also?
Yes. Are you getting 23.6 here? Yes, ma'am. Yes, you are getting 11.25. Either you can add it 2 times or you can multiply it by 2. Right? Answer will be same. Is it coming out to be 22.5? Yes, ma'am. Yes. Please add it. Add them and find the parameter. One will be carry over 6, 4, 6.1. What is the decimal part? 1, 2, 3, 4. 11.25 beta, there are two sides, you will multiply it by 2. Please check it. 22.5 is given. And 5.9 is coming out to be 5.9 into 4 when you do. Everybody do it, beta. 23.6. Okay, you have to add them because this is a parameter. It's coming out to be 46.1. Please correct it. 46.1 centimeter. But take care of decimal part, okay? Whether you are doing in multiplication or addition or subtraction, you have to do it very carefully. Okay. Please revise these all at home also. Who are getting this answer? 46.1. Yes, yes. The girl who told me the answer, please correct it, beta. There is a little mistake in decimal part. Okay, your time is going to off, but I want to tell you how to do the next question so that you can try at home. Okay, question number 3 is your area. Find the area of the following figures. It is of same kind. To find the area, you have to complete the figure by dotted lines. Okay, we will be doing it next time. Either you have to convert the figure into square or rectangle, complete the figure, then apply the formula of square and rectangle respectively. Right, beta? Any doubt till here? Anything you want to ask? Okay, please revise these all questions at home. Okay, beta? So see you next time. Who are finding this chapter to be easy? Raise your hand. Yes, your mark should not be cut in this. Very easy chapter. Yes. Okay, good. See you next time, beta. Third question, third part. Third question, third part. Yeah. You have to do first and second also yet? Ma'am, that I have done, but third, I don't understand. Can you please explain me? Okay. The third question, third part. Okay. Yes, Let us complete the figure. Third question, third part. Okay. It is like this. This is full length, and then this is like this. Few lines are here, which is a smaller part. This is smaller part. Okay, this is 2 given, and then you're going up, and this length is also given to you. This is 4. This is 4. This total is 17. This is 11, and this is 10. Okay, you have to complete the figure. Let us try by joining it. And this also. Okay. Are you getting the complete figures? Are you getting here rectangle? Here also rectangle. Here also rectangle you are getting. Can you see 3 rectangles over here? Okay. Now in this rectangle,
You know this is 2, breadth is 2, here also it is 2. Here breadth is 4, here also it is breadth is 4. Now total is 17 and this is 10. It means till here it is 10. This is 10. Right? So we have to know this part, this width we have to know what it should be. Right? So think of it. We'll be doing it next time. Your time is going to up now. Complete this figure. There are 3 rectangles are making 1, 2 and 3. For area of rectangle, you need to know L or and B so that you can apply this formula. Okay. For every rectangle, you need to find L. For every rectangle, you need to know B also. Okay. We are doing it next time. We'll be continuing this. Okay. So see you next time, beta. Please revise till here. Okay.